So good afternoon all. Today's topic is parajumbles. I hope my voice is clear and it is audible to all of you. Whatever queries or whatever questions, if you have or if you may arise with, you can always drop a message in the chat box. जो भी आपका डाउट होगा या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट बॉक्स में प्लीज डाल सकते हो उसको. आज का टॉपिक है पैराजम्बल्स. So today's topic is parajumbles. I hope everybody is aware of this topic. Parajumbles is very closely related with reading comprehension. Okay, so parajumbles is closely related. It is related to reading comprehension. Okay. Parajumbles is, before going to parajumbles, I would like to briefly tell you about how these two topics help you in securing decent enough marks. I mean, it is for all those who stumble in their grammar or who are weak at the grammar or in the grammar section. Out of like English, for any banking exam, English comprises or consists of 30 marks. Okay. So out of this 30 marks, RC will give you, RC is reading comprehension. Reading comprehension will give you 5 to 10 marks, depending on what type of questions have been asked. And parajumbles will give you at least 5 to 6 marks in your prelims. So if we take the lower limit, we have 5 plus 5. So we have 10 marks over here. And if we take the upper limit, we have like around, 16 marks over here. So 10 to 15. So if we say that, or if we take an average, we can say that out of these 30 marks, 10 to 12 marks will be given to you. 10 to 12 marks you'll secure only by studying two things. That is reading comprehension and next one is parajumbles. Is that clear? Okay. So parajumbles is pretty important. It is an important topic. Let's move ahead. What is a parajumble? See, parajumbles, we can say that, or we can see that parajumbles. It is taken from two words. Para stands for paragraph, and this second one is jumbled, जो उल्टा पुल्टा set करके दिया जाता. So it is basically a paragraph which has been jumbled. So parajumbles is nothing but it is a paragraph. It is a paragraph which is jumbled. Okay. So it's a paragraph which is jumbled, or a paragraph which is not in the correct order or which is not in the correct sequence. Parajumbles are also known as, ये भी आपको पता होना चाहिए कि parajumbles are also known by the names of sentence rearrangement, or paragraph rearrangement. So parajumbles are also known as sentence rearrangement or paragraph rearrangement. So whatever may be asked in the question, even if it is parajumble, or it is sentence rearrangement, or it is paragraph rearrangement, whatever name it may be, you have to do the same thing. Okay, you have to place all the sentences in the correct order. I hope this is clear with all of you. Let's move ahead. Now, I've already told you that
over here that we will be having like 5 to 6 marks. Okay. So para jumbles will be having at least for 5 marks in prelims. So 5 marks, at least 5 marks in prelims, and 7 to 8 marks in mains. Okay. So this all depends on that year's papers or which shift of the exam you come or you get. But for prelims, minimum 5 marks is expected. Mains, it can hover from 5 to 8 marks. Sometimes if you're lucky enough, you can get 7 to 8 marks para jumble also. Now the best thing, or not the best thing, but one positive thing that we can say about para jumbles is that, I mean, this is for those who are scared of grammar. You know, this is for those who are scared of grammar, those who have some kind of a fear with grammar, because para jumbles do not have any grammar. No usage of grammar. No usage of grammar. आपको इसमें ग्रामर का यूजेज करना नहीं है. So those who are scared of grammar, those who are scared of verbs and adverbs and adjectives and nouns and all the rules that are associated with grammar, rules of grammar, those who are afraid of rules of grammar, those people need not worry about para jumbles. Why? Because para jumbles do not have or do not take into account the rules of grammar. Okay, so this is a positive sign for those who are scared of grammar. Now, what is required for para jumbles? The same things that are required for reading comprehension. What is required? What is required? So what is required for you to solve a para jumble? First thing is understanding. One thing that will play a huge role in this is your understanding. अब जितना आपका अंडरस्टैंडिंग होगा उतना ही जल्दी आप para jumble सॉल्व करना आपको आ जाएगा, उतना ही you will save time, because what you are fighting against is time. You have 60 minutes, and you have to solve 100 questions. So your race is against time. So to save time, you need to be good at your understanding. Now, I would like to say this with the double inverted commas, that understanding, you yourself have to develop the understanding. आपको खुद से आपका understanding बढ़ाना होगा. Nobody can teach you how to understand. ये तो आपने ही बार बार कर करके वही चीज आप repetitively करोगे, तब जाके आपका understanding अपने आप बढ़ जाएगा. Now, understanding requires patience. Understanding requires patience. If you're not patient enough, if you want everything to happen in one night, or you want everything to happen in a couple of hours, that is not possible, especially in topics that are subjective in nature. So आपको patience रखना बहुत ही जरूरी है. Patience से आप patiently काम करोगे, consistently काम करोगे, तो आपका understanding बढ़ जाएगा. Okay. Other thing that requires over here is your instincts. Instincts. अब instincts कब बढ़ेगा? Now, instincts are directly related to your understanding. अगर आपका understanding अच्छा होगा, तो आपका instinct भी उतना ही काम करेगा. Now, these two concepts are very hard to explain, or not hard to explain, but these are subjective in nature. Now, instinct, how can I explain instinct? Is like, we all eat food. मतलब हम सब लोग खाना खाते हैं, या फिर भूख लगने के बाद हम सब लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना? So when we are hungry, our instinct
tells us, or our conscious mind tells us that we should have some food. Or when we are thirsty, we go to get a bottle of water, or we go to get a glass of water. Now these are all instincts. तो ये इंस्टिंक्ट आपका वैसा ही इंस्टिंक्ट आपका पैराजम्बल सॉल्व करने में भी आएगा. You will require your instincts to work over there also. ठीक है. अब ये दोनों चीजें आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस से आपको वो समझ में आएगा. And the third one that I will like to share with you is there are some techniques to solve parajumbles. There are some techniques to solve parajumble. I'll write this technique in a separate page. So there are some techniques. Now, first thing that I would like to tell you is that these techniques are not universal, or let's say these are not objective techniques. Like for example, in quant, you will see in quant, or in no, let's not say quant, let's say in maths. In maths, it is always 2 plus 2 will always give you 4. Now this is very objective. 2 plus 2 will always give you 4. Whether I add it in the morning, whether I add it in the afternoon, evening, night, or whenever, or whoever adds it, 2 plus 2 will always be 4. But in English or in any languages, in any language, there is a lot of subjectivity. There is a lot of subjectivity. Now, subjectivity is like you say something and it may mean the same thing or it may not mean the same thing. For example, there are use of sarcasm and there are use of other devices that are used in languages. For example, if I say, I am not hungry. Now, what does this mean? I am not hungry. This means, if we go by the plain meaning of this means that I am not hungry means कि मुझे भूख नहीं है. But if we add some emotion to this, or if we add some context to this, if I add sarcasm to this, I may say that I am very hungry, but since I am very angry, in retaliation, I am saying that I am not hungry. So this is called subjectivity. It all depends on your understanding and your comprehending skills. So parajumbles will be having techniques though that are only thumb rules. These are not objective in nature. These are not objective. It can't be like 2 plus 2 will be 4. Every time these thumb rules will click, it is not a guarantee. But these techniques will definitely save your time. It will take closer to your answers. Whatever you are solving, whichever parajumble you are solving, it will definitely take you closer to it. Now let's see the techniques one by one. The first step in parajumbles is how to identify the first statement. ठीक है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेटमेंट. अब देखो पैराजम्बल में क्या होगा ना, आपको ए बी सी डी ई एफ 5 या 6 सेंटेंसेस का आपका पैराग्राफ होगा, जो 6 सेंटेंसेस में या 5 सेंटेंसेस में डिवाइड किया होगा. उसमें से आपको पहला स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. अब कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट? Now the one thumb rule for that is, now the first thing that you are going to do is, see, if you're starting with your parajumbles, if you're very new to this topic, if you're very new, आज ही आपने चालू किया है,
you are new to this exam pattern, what you are supposed to do is, and those who are veterans also, it is for them also, the first thing that you are going to do is read all the statements. Read all the statements. Those who are new to this, you should be reading it 2 to 3 times. Reread the statements. Reread the statements. So this is the first thing that you have to do. Okay ना? जैसे मान लो कि 5 या 6 स्टेटमेंट्स का पैराजंबल है, तो आपने वो सारे के सारे, इवन इफ इट इज नॉट मेकिंग अ सेंस टू रीड इन दैट ऑर्डर, मतलब ए और बी का कुछ तालमेल नहीं हो रहा है या बी और सी का कुछ तालमेल नहीं हो रहा है, नहीं होने दो, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल स्टेजेस में यू आर गोइंग टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, and those who are new to this field, those who are new to this topic, they are going to read it multiple times. I would suggest go through the 5-6 sentences at least 3 times, at least 3 times, 2 to 3 times in the initial stages. जैसे ही आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, जैसे ही आप यूज टू हो जाओगे इस टॉपिक को, वैसे आपको खुद समझ में आएगा कि 2-3 बार पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, एक बार पढ़ने के बाद भी हमें समझ में आ रहा है। This will happen, definitely it will happen with each and every one of you, but for that it will require some time, it will require some patience from your side. अब 2-3 बार आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, जब भी आप जैसे ही आपने पढ़ लिया 2 बार 3 बार, जो काफी बार इसको सॉल्व किए हैं उन्होंने एक बार पढ़ने के बाद भी समझ में आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एलिमिनेट करने हैं सेंटेंसेस को। यू हैव टू एलिमिनेट द सेंटेंसेस, ठीक है ना, यू हैव टू एलिमिनेट द सेंटेंसेस। पहले क्या करना है, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। अब ये किस चीज के लिए चल रहा है, दिस ये और सब कुछ चल रहा है फॉर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना, ये सब कुछ चल रहा है फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। पहले क्या करना है, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द स्टेटमेंट्स, देन यू हैव टू eliminate the sentences or eliminate the statements. अब कौन से? Now this is the question that might be coming to your mind. Like I'm telling you to read all the statements and then eliminate the sentences. Which sentences you're supposed to eliminate? The sentences which have or which has a pronoun in it, or which has an adjective in it. Is that clear? Eliminate the sentences which has a pronoun or which has an adjective in it. Now I'll give you an example. Let's say that I'm writing a statement that the statement is, let's say statement A is saying he was born in Mumbai and he completed his graduation from Bengaluru. Okay. Now there is a statement which is saying he was born in Mumbai and he completed his graduation from Bengaluru. Now who am I talking about? Now give a minute for this, read the statement and tell me, who am I talking about? He was born in Mumbai and he completed his graduation from Bengaluru. Which person am I talking about? Now I must guess that you must be saying that I am talking about he. Now this he represents whom? Who am I talking about?
At this moment, we have no idea that this he means who. I've got no idea. Or for that matter, we have got no idea this he represents whom. But if I give you another statement B, that Suresh is now working in Amsterdam. Suresh is now working in Amsterdam. Now, this is the second statement. Suresh is now working in Amsterdam. Now tell me this he represents whom? Now tell me this he represents whom? This he represents Suresh. Is that clear? When we didn't have the statement B, we were clueless who this he was. But as soon as we see the statement B, that Suresh is now working in Amsterdam, we understood, or we can give a link, or we can connect these two statements, that this he over here is somehow related to Suresh. Is that clear? I hope you are getting my point. Now let's go to the previous one. Now eliminate the sentences which has a pronoun or which has an adjective. Now why? Because all the sentences which has a pronoun or an adjective in it cannot be your first statement. Cannot be your first statement. So all the statements which has a pronoun or which has an adjective in it cannot be your first statement. Now why this? Because it is a rule that pronoun always comes after a noun, or comes in place of a noun. Comes in place of a noun. मतलब पहले मैं सुरेश बोलूंगा कि सुरेश अभी एम्स्टर्डम में काम कर रहा है. सुरेश is now working in Amsterdam. Now after that I want to say that he was born in Bombay or Mumbai and he completed his graduation from Bengaluru. So what is the rule? That first thing is that I will introduce with the proper noun, that is Suresh, and to avoid the repetition of nouns we use pronoun. Is that clear? नाउन को बार बार नहीं लेना है, मतलब बार बार मुझे सुरेश नहीं बोलना. जैसे सुरेश इज नाउ वर्किंग इन एम्स्टर्डम, सुरेश वाज बोर्न इन मुंबई, सुरेश कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम बेंगलुरु. हर बार मुझे सुरेश 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 नहीं लिखना है. इज दैट क्लियर? इसलिए सुरेश को भी रिप्लेस करते हैं ही के साथ. इज दैट क्लियर? अब नाउन को हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ, बिकॉज दैट इज द वर्क दैट अ प्रोनाउन डज. इसीलिए प्रोनाउन वाले जो स्टेटमेंट्स है वो आपके पहला स्टेटमेंट होगा नहीं. आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. एलिमिनेट ऑल द सेंटेंसेस विच हैज अ प्रोनाउन इन इट और विच हैज एन एडजेक्टिव. ठीक है ना? अब प्रोनाउन वाले कौन से? प्रोनाउन मतलब क्या? मतलब यहां पर मैंने क्या लिखा? एलिमिनेट द सेंटेंसेस और द स्टेटमेंट्स. Eliminate the statements which has a pronoun. Eliminate the statements which has a pronoun or which have a pronoun. Let's say he, she, it, they. We can say adjectives or determiners or like any name for this. This, that, these. So whenever you see these statements in a sentence, you should be, with practice, you'll develop the skill also. Whenever you see a pronoun or an adjective or something like that, possessive pronouns or possessive adjectives, you will immediately identify that this cannot be your first statement. जिस sentence में आपको he, she, it, they आया, या this, that, these, those, yes, I forgot those, this, that, these, those आ गया, तो समझ लेना कि ये आपका पहला स्टेटमेंट होगा नहीं. This cannot be your first statement in any case. Why?
बिकॉज इट्स अ जनरल रूल. नाउन पहले इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद आपका प्रोनाउन आएगा. अब देखना, अभी इसमें भी थोड़ा सा एक कैच है या एक एक्सेप्शन ना. इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस. Now, if we have a statement like, let's say, let's take the earlier example that Suresh is now working in Amsterdam. Suresh is now working in Amsterdam. But he was born in Mumbai. अब देखना, अब ऐसा स्टेटमेंट आएगा या ऐसा स्टेटमेंट आ गया आपको एग्जाम में. नाउ दिस इज वन होल स्टेटमेंट. अब यहां पर ही है. नाउ डोंट डू द मिस्टेक कि यहां पर ही है तो ये पहला स्टेटमेंट नहीं होगा. ये मिस्टेक मत करना. Why? Because I'm saying this. Why? Because यहाँ पर आपका noun भी है. So this a statement which has a noun as well as a pronoun in it can be your first statement. You have to eliminate all the statements which has only pronoun in it. जैसे for example ये दो statements को हम अभी divide करते हैं. Let's say statement A is saying Suresh is now working in Amsterdam. And B1 is he was born in Bombay or Mumbai. He was born in Mumbai. Now see, now you can eliminate statement B. You can now eliminate this statement. Eliminate this statement because this cannot be your first statement. Eliminate this. Why? Because it has only a pronoun. यहाँ पर आपको noun नहीं दिखाई दे रहा. So you can eliminate this statement. This cannot be your first statement. But if you see this statement, this one, if you see this statement, you cannot eliminate this because it has a noun also in it. It has a noun in it as well as a pronoun in it. So this can be your first statement. So do not do this mistake. आपने ये गलती नहीं करना है. जहां पर नाउन और प्रोनाउन दोनों भी है, वो सेंटेंस आपका पहला सेंटेंस हो भी सकता है. ठीक है? Is that clear? I hope it is clear. Now let's move ahead. Let's go to the next step. ठीक है ना? So हमने क्या देखा अभी? We saw how to identify the first statement. Now let's move ahead. Second step is how to identify the last statement. ठीक है? So what are we supposed to do? First thing first, कि पहला स्टेटमेंट देख लो कि 5-6 में से all of the given 5-6 sentences you have to identify which is the first statement. कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है वो पहले देख लेते हैं एंड देन दूसरा स्टेप क्या है, लास्ट वाला देखेंगे. अब लास्ट वाले में कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला तो इजी है कि नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, सॉरी प्रोनाउन या एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस हो गए. सिर्फ प्रोनाउन और सिर्फ एडजेक्टिव वाले उसको एलिमिनेट कर दो. जो बच जाता है
Yes. So now we'll look for how to identify the last statement. For this, we'll be looking for a statement that is suggestive in nature. Suggestive matlab kya? A statement which gives you a suggestion, or a conclusive statement. Conclusive matlab kya? जो आपको conclusion देता है. We'll look these two with an example. Let's say that there is a statement which is saying, like, you have a B, now C statement here. Now C statement says that the government of India should follow the strategies given by the World Bank to elevate poverty. And then we have statement D, E. Let's say we have a 5-statement paragraph. Now, one of the statement over here is saying that the government of India should follow the strategies given by the World Bank to elevate its poverty. Okay, now to elevate its poverty. Now, this is the statement that has been given. Now, what do you think after reading this statement? Is it giving any suggestion? क्या ये statement आपको ऐसा लग रहा है कि ये suggestion दे रहा है? Yes, indeed, it is given because ये यहाँ पर author क्या कह रहा है कि the government of India, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने should follow, मतलब उन्होंने फॉलो करना चाहिए. क्या फॉलो करना चाहिए? The strategies that have been given by World Bank to elevate its poverty. मतलब अपनी गरीबी को हटाने के लिए they should follow the strategies that have been given by the World Bank. Now, this is a statement which is giving you a suggestion. So all the statements that give you suggestions or are suggestive in nature will be your last statement. Is that clear? So any statement which is suggestive in nature will be your last statement. Now let's see. Now let's say let's say about the conclusive statement. Now let's take into consideration that we have a statement A, or let's say we have a statement D, that the government of India, followed the strategy given by the World Bank, and elevated 15 million people from the government of India followed the strategy given by the World Bank and elevated 15 million people from poverty.
Yes. So now you can see that statement C is suggestive in nature, that the government of India should follow the strategies given by the World Bank to elevate its power. What is it saying? That government of India ने कुछ follow करना चाहिए. क्या follow करना चाहिए? The strategy that has been suggested by World Bank. Now this is suggestive in nature. तो ये होगा आपका, this can be your last statement. Okay ना? So statement C can be your last statement. अब can be क्यों बोल रहा हूं? Because we have D also over here. ठीक है ना? अब इसका मैं थोड़ी देर बाद में आपको समझाता हूं कि कौन सा होगा. तो D क्या कहता है कि D कह रहा है कि the government of India followed the strategy given by the World Bank and elevated 15 million people from poverty. अब ये क्या कह रहा है? ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट. सजेस्टिव स्टेटमेंट में क्या होता है? सजेशन दिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है उसको फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट ने. ये हो गया सजेशन. कंक्लूजन क्या होता है कि कुछ होने के बाद जो हम रिजल्ट बताते हैं सीधा, जैसे वी कैन सी इन स्टेटमेंट डी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड द स्ट्रैटेजी. मतलब क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रैटेजी फॉलो किया. कौन सा? द वन दैट वाज सजेस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. जो वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ था वो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद द एलिवेटेड, मतलब उन्होंने 15 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग. दैट मींस स्टेटमेंट डी इज कंक्लूसिव. ये कंक्लूजन दे रहा है आपको, कंक्लूसिव है. अब ऐसा अगर सिचुएशन आया कि एक ही पैराजंबल में आपका सजेस्टिव भी है और कंक्लूसिव भी है, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे? See, I'll again tell you how to identify. Last statement वाला चल रहा है. How to identify the last statement. इसमें क्या होगा? मैंने बोला आपको कि find a statement which is suggestive in nature or which is giving a suggestion or conclusion. मतलब 5 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आपको सजेशन दे रहा है, इट विल बी योर लास्ट. या एक स्टेटमेंट है सिर्फ कंक्लूजन दे रहा है, लास्ट. बट प्रॉब्लम कब आएगा? बट एक ही पैराजंबल में आपको सजेस्टिव वाला भी दिखाई दे रहा है, मतलब सजेशन वाला भी दिखाई दे रहा है, और आपको कंक्लूजन वाला भी दिखाई दे रहा है. ठीक है ना? जैसे हमारे इस केस में हुआ था ABCD वाले में कि C वाला सजेस्टिव है और D वाला कंक्लूसिव है. अब ऐसे इसमें क्या करेंगे? ऐसे इसमें हम क्या करेंगे? सजेशन वाला जो होता है, सजेशन वाला हमेशा सी से पहले आएगा. मतलब जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, तो सजेस्टिव वाला एस लिख रहा हूं मैं, एस फॉर सजेशन. सजेस्टिव वाला आपका सेकेंड लास्ट आएगा और कंक्लूजन वाला आपका लास्ट आएगा. ठीक है? I'll again tell you 3 पॉसिबिलिटीज यहां पर हो रही है. ठीक है ना? I'll just tell you all the 3 possibilities. तीन पॉसिबिलिटीज है हाउ टू आइडेंटिफाई लास्ट स्टेटमेंट. जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ABCDEF, 6 स्टेटमेंट वाला है, तो आपका सजेशन वाला लास्ट आएगा इफ देयर इज ओनली सजेशन वाला स्टेटमेंट. दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, सिर्फ कंक्लूजन वाला है तो कंक्लूजन वाला लास्ट आएगा. और तीसरी पॉसिबिलिटी जहां पर ज्यादातर फंसने के चांसेस है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला आएगा कंक्लूजन, सेकंड लास्ट वाला आएगा सजेशन. तो यह सजेशन वाला स्टेटमेंट विल ऑलवेज कम प्रायर टू योर कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट. इज दैट क्लियर? 3 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 एंड 3. Clear? I hope this is clear with all of you. Let's move ahead. So first statement हो गया, second statement, first how to identify first statement हो गया, and how to identify last statement हो गया. Now let's move ahead. अब बीच वालों को कैसे करना है? तो पहला कर दिया, लास्ट वाला कर दिया. Now बीच वालों को कैसे करेंगे? By making pairs. We'll find some connections by making pairs or finding connections, or linking them or joining them. Making pairs, linking them, linking sentences, or we can say
joining them, interconnecting them, give whatever name you want to. अब इसको कैसे करेंगे? तो पहला इसका है फर्स्ट टेक्निक और फर्स्ट थंब रूल इज नाउन प्रोनाउन वाले पेयर बना लो या नाउन प्रोनाउन वाले स्टेटमेंट्स को जोड़ दो. फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ स्टेटमेंट ए व्हिच इज टॉकिंग अबाउट शी. स्टेटमेंट बी इज टॉकिंग अबाउट प्रियंका. Statement C is talking about Rahul, and statement D is talking about he. अब कैसे करोगे इसको? मैंने पहले फर्स्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हुए समझाया था आपको कि नाउन प्रोनाउन में प्रोनाउन हमेशा बाद में आता है. ठीक है ना? तो यहां पर पेयर कैसे बनेगा? बी और ए का पेयर बनेगा और दूसरा पेयर बनेगा आपका सी और डी का. ठीक है ना? तो ए और बी और ए. बी क्यों? क्योंकि बी हैज अ नाउन इन इट, प्रियंका. और ए क्यों? बिकॉज ए इज शी. शी हम किसके साथ यूज करते हैं? विद द फीमेल जेंडर. सो प्रियंका के साथ हम शी लगाएंगे और राहुल के साथ ही. तो बी ए का पेयर बन जाएगा और सी डी का. सी में क्या है? राहुल, अ नाउन. डी में क्या है? ही, अ प्रोनाउन. तो सबसे आसान होता है ये नाउन प्रोनाउन वाला. ठीक है? लेट्स मूव अहेड. Now the next thing that we are going to do is next way of doing is, let's say, starters and connectors. Starters and connectors. Now there are some conjunctions which come only in the start. Okay, now starters में क्या आएगा? स्टार्टर्स में आपका आएगा while, this, that. ठीक है? और कनेक्टर्स में आपके क्या आएंगे? but, and, इसमें आएगा instead, despite. ठीक है ना? So those things or these statements or these words or these statement or the statements having these words will be your starters. Starters मतलब क्या? वो पेयर बनाते समय वो आपके स्टार्टर होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से दैट वी हैव अ स्टेटमेंट व्हिच हैज व्हाट वी कैन से फर्दर भी आता है इसमें. फर्दर, let's say we have a statement which has further in it, and there is this long statement, and then we have a statement, let's say E, which has but in it. Okay, and you know that these two statements are having the same context or same link. Both the statements are talking about the same thing. Only the thing is कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पहले B आएगा कि पहले E आएगा. तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि फर्दर इज अ स्टार्टर एंड बट इज अ कनेक्टर. आपका पेयर बनेगा बी और ई का. ठीक है जी? चलो, द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कंजंक्शंस. Is about conjunctions. Now understand that any sentence or any passage has a tone in it, and there are two types of tones. One is positive tone.
That means in positive tone you'll always see praises, अच्छा अच्छा बात करते हैं उसमें. And negative tone will comprise of criticism. Okay. Now let's see how to identify. Now conjunctions are of two types. One is contrast conjunction. Contrast conjunction is but. The examples are but, however, instead, and there are additional conjunctions. Additional conjunctions. For example, also, and then we can say further. Further is also an additional conjunction. Okay. A contrast conjunction just taken into consideration for your understanding, but, and from additional conjunctions we'll take and. So let's concentrate on these two conjunctions, but and. Let's move ahead. अब कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टोन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव. कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्ट इज व्हाट? कॉन्ट्रास्ट मींस नथिंग बट ऑपोजिट, समथिंग दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर. सो कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन क्या करेंगे? पॉजिटिव टोन वाले जो स्टेटमेंट्स है उनको जोड़ेंगे. दे विल कनेक्ट इट विद contrast conjunctions will connect positive tone statements with negative tone statements, and it will connect negative tone statements with positive tone statements. Is that clear? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेगा. और एडिशनल कंजंक्शन क्या करेंगे? इनका आसान काम होता है. They do the simple work of joining positive statements with positive, positive with positive, and negative with negative. ठीक है? Is that clear? So contrast conjunction. For example, let's say हमने क्या बोला था कि but को हम करेंगे और additional में हम and को लेके जाएंगे. So but is a contrast conjunction. तो but क्या काम करेगा? Positive statement वाले को जोड़ेगा negative के साथ, या फिर नेगेटिव वाले को जोड़ेगा पॉजिटिव के साथ. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन कि बट कौन से टोन का स्टेटमेंट है. अगर बट नेगेटिव टोन वाला स्टेटमेंट है तो वो पॉजिटिव वाले को जोड़ेगा, या बट पॉजिटिव टोन वाला स्टेटमेंट है तो वो नेगेटिव टोन वाले को जोड़ेगा. एडिशनल क्या करेगा? लेट्स से एंड इज एन एडिशनल कंजंक्शन, सो इट विल जॉइन पॉजिटिव विद पॉजिटिव. अगर एंड इज अ पॉजिटिव टोन वाला स्टेटमेंट तो इट विल जॉइन अ पॉजिटिव टोन स्टेटमेंट. If and is a negative tone statement, then it will join negative tone statement. Is that clear? Now let's see through an example. Let's say that we have a parajumble A, D, E. Let's say A is a positive tone statement. D is also a positive tone statement, and E is also a positive tone statement. Okay, now let's see how the conjunctions help in solving. Now there is statement B, which is negative in tone. Then we have C, that is also negative in tone, and then we have the last statement, that is F, and this is suggestive. ये suggestion दे रहा है. ठीक है ना? Now let's see कि इसको कैसे solve करेंगे. मतलब no need to look at other things. A, B, C, D, E, F. अब मुझे बताओ गिवन इंफॉर्मेशन से आप कैसे, कौन सा स्टेटमेंट कहां पर आएगा? गिवन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट कहां पर आएगा? ए कहां आएगा, बी कहां आएगा? कुछ अंदाजा लगा सकते हो?
The answer is no, because there is not enough information to put the sentences into sequence. सिर्फ हमें पता है कि F statement is suggestion दे रहा है, तो F आपका लास्ट में आएगा, करेक्ट। अब और इंफॉर्मेशन देता हूं, बी में आपको बट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बट। अब बट कौन सा कंजंक्शन है? इट इज अ कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन। कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन क्या करता है? अभी बताया था, कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन ज्वाइन करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव से। नाउ यूज दिस लॉजिक, पॉजिटिव को नेगेटिव से करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से। अब बी है, बी इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में बट है विच इज कॉन्ट्रास्ट, तो ये किसको जोड़ेगा? इट विल ऐड और इट विल ज्वाइन विद आइदर ए, डी और ई, है कि नहीं? मतलब क्या होगा? बी आपका सी से पहले आएगा, बिकॉज यहां पर ए, डी या ई आएगा। मान लो हम ऐसे लिखते हैं, इधर एफ, इधर सी और इधर बी, अगर ऐसे कर देंगे then it is not satisfying the condition because C will be positive negative, B also will be negative, और नेगेटिव नेगेटिव को ज्वाइन कर रहा है, बट B में तो बट है ना, B has but in it, तो बट होने के बाद how can these two join each other because both are negative, so this is not satisfying the condition of a contrast conjunction, so ये वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इसलिए पहला वाला ही हो जाएगा। इसलिए मैं ये रब कर देता हूं। So BCF. Now let's say कि A statement has a pronoun in it, and E has a noun in it. तब क्या होगा? And B has additional and in it. अब कैसा होगा सीक्वेंस? नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, मतलब E और A का पेयर बन गया, E और A का पेयर बन गया, E और A साथ में आएंगे क्योंकि नाउन और प्रोनाउन है। D में एंड है, एंड इज एडिशनल कंजंक्शन, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेगा, तो आपका बन गया E A D। नाउ सी, E एंड A आर जॉइनिंग ईच अदर, नाउन और प्रोनाउन का मेल हो रहा है, मतलब ये जॉइनिंग हो रहा है। देन D में क्या है? D में एडिशनल कंजंक्शन है। नाउ A इज व्हाट? A इज पॉजिटिव tone and D is also positive tone, and here we have and in statement D has and in it. It is satisfying the condition of joining positive with positive. B has but in it. B has but in it, but क्या होता है? Contrast, and B statement is negative joining with positive. The positive is joining with negative, तो but वाला condition भी solve हो रहा है, and then C and then F. F तो suggestion है, तो C के लिए बस यही जगह बचती है। So E, A, D, B, C, F. This is how you can solve parajumble only by using conjunctions. So this is not the only way of solving parajumbles, but conjunctions help us a lot in determining which statement will follow which statement, or it helps us in identifying the tone of the statement. Okay, or it identifies us, or it helps us in identifying which statement should we be joining with the other statement. Okay. Okay, so that is it for this lecture. The remaining topic or the remaining part of parajumbles will conclude it in the subsequent lectures or the next lectures. Okay, so thank you so much for this. I hope you have understood. In the next lecture, we'll continue with the same topic. Thank you so much.